upright and seatbelt tightly fastened. Secure your tray table, footrest, and arm video unit and handset. As a safety precaution, passengers seated in the front row of each cabin are required to store their PTVs when instructed by the crew. Smoking, including electronic cigarettes, is not permitted on this flight. We are pleased to inform you that we have a sky buffet available to passengers between regular meal service. The cabin crew are here to make your flight comfortable. Do call us should you require any assistance. For your air travel related complaints and suggestions, you may log into Air India website and choose feedback for the same. We wish you a pleasant flight. Thank you. नमस्कार, कृपया अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें। कृपया अपनी सीट सीधी रखें और सीट बेल्ट कसकर बांध लें। ट्रे टेबल, फुटरेस्ट, इनाम वीडियो यूनिट, हैंडसेट को नियत स्थान पर रख दें। सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक कैबिन की पहली पंक्ति में बैठे यात्रियों से अनुरोध है कि वह क्रू द्वारा निर्देश दिए जाने पर पीटीवी को उसके नियत स्थान पर रखें। इस उड़ान में धूम्रपान एवं ई सिगरेट पीना मना है। हमें ये सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि नियमित खान पान सेवा के बीच हमारे यात्रियों के लिए स्काई बुफे उपलब्ध है। सभी कैबिन क्रू आपकी सेवा में हैं। यदि आपको किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो हमसे संपर्क करें। अपनी हवाई यात्रा संबंधी शिकायतें एवं सुझाव के लिए आप एयर इंडिया की वेबसाइट पर लॉग ऑन कर सकते हैं। हम आपकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, welcome aboard Air India. Before we take off, we would like to inform you about the flight safety features and procedures of this aircraft. Please pay close attention to this flight safety video. The use of mobile phones interferes with the aircraft systems. In the interest of safety, please ensure that your mobile phones are switched off or in non-transmitting mode such as flight mode or airplane mode throughout the flight. Laptop and electronic items may be used after takeoff only after consulting the cabin crew. Please ensure that all your hand baggage is properly stored in the overhead bins or under the seat in front of you. Aisles as well as exits must be kept free of baggage at all times. It is very important that you observe the fasten seatbelt sign whenever it is switched on. To fasten the seatbelt, push this fitting into the buckle, then pull the loose end of the strap to tighten it. To release the belt, lift this flap. Seat belts must be securely fastened when the aircraft is taxiing, taking off and landing, and whenever the fasten seat belt sign is switched on during the flight. For your own safety, we would advise you to keep your seat belt loosely fastened throughout the flight. Please keep your seats in an upright position. Secure tray tables, footrests, in-arm video units, and handsets. Infants should not be fed during takeoff, landing and turbulence when the seatbelt sign is on. During takeoff and landing, the infant should be Seat-mounted emergency escape path lights will illuminate and guide you to the nearest exit. Passengers seated next to the exits should familiarize themselves with the operation of the exits. Please contact our cabin crew if you have any questions. To open the door, rotate the handle in the direction of the arrow marked on the door. Smoking and use of e-cigarette on board is strictly prohibited. Toilets are fitted with smoke detectors. It is an offense to tamper with them. In the event of a fall in cabin pressure, oxygen masks will drop automatically from the unit above you. Place the mask over your nose and mouth, tighten the elastic band over your head and breathe normally. After firmly securing your own oxygen mask, please attend to children and others who might need help. Extra oxygen masks are provided for infants. Each seat is provided with a life vest. In the unlikely event of an emergency evacuation over water, you will be instructed by the crew to remove the life vest, slip it over your head and secure the straps as demonstrated. To inflate the vest, pull down sharply on the red toggle in front. You can also inflate it by blowing into the red tube at the top. Each vest has a light which is activated when the battery comes in contact with water. Life vest should be inflated only when instructed by the cabin crew or just before leaving the aircraft. Crew will provide infant life vest for babies if necessary. In the unlikely event of an emergency landing, please adopt the brace position as shown on the screen. Please study the safety briefing card which is provided for each seat.
If you have any concerns, please call the cabin crew who will be happy to assist you. Please note that exit signs on this airplane utilize this green symbol to identify the exits. This green symbol with arrows indicates the direction to the exit. Locate the exits nearest to you using these green symbols. The nearest exit may be behind you. Thank you and we wish you a pleasant flight. देवियों सज्जनों, विमान के उड़ान भरने से पहले हम आपको इस विमान की उड़ान सुरक्षा संबंधी जानकारी देंगे। कृपया उड़ान सुरक्षा संबंधी इस वीडियो फिल्म को ध्यानपूर्वक देखें। मोबाइल फोन के प्रयोग से विमान संचालन में बाधा पहुंचती है। सुरक्षा के लिए कृपया सुनिश्चित करें कि उड़ान के दौरान आपका मोबाइल फोन बंद है या नॉन ट्रांसमिटिंग मोड जैसे फ्लाइट मोड या एयरप्लेन मोड पर है। लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग उड़ान भरने के बाद कैबिन क्रू से पूछकर ही करें। कृपया सुनिश्चित करें कि आपका हाथ का सारा सामान ऊपर बने सामान कक्ष में या आपके सामने की सीट के नीचे ठीक तरह से रखा गया है। गलियारों तथा दरवाजों के पास कभी भी कोई सामान न रखें। अपनी खिड़की के शेड को हल्का करें। सीट बेल्ट बांधने का संकेत रहने पर कृपया इनका पालन करें। सीट बेल्ट बांधने के लिए मेटल फिटिंग को बकल में डालें और बेल्ट को कसने के लिए स्ट्रैप के ढीले सिरे को खींचें। बेल्ट खोलने के लिए इस फ्लैप को उठाएं। विमान के रनवे पर चलते, उड़ान भरते या उतरते समय तथा उड़ान के दौरान जब कभी सीट बेल्ट बांधने के संकेत हों तो सीट बेल्ट बांधे रखें। अपनी सुरक्षा के लिए कृपया यात्रा के दौरान अपनी सीट बेल्ट ढीली कर बांधे रखें। कृपया अपनी सीट सीधी रखें। फुट रेस्ट, इनाम वीडियो यूनिट और हैंडसेट को नियत स्थान पर रखें। विमान के उड़ान भरते तथा उतरते समय तथा मौसम के खराब होने पर जब सीट बेल्ट बांधने के संकेत हो तो कृपया शिशु को दूध न पिलाएं। विमान के उड़ान भरते एवं उतरते समय शिशु को गोद में सीधा बिठाकर मजबूती से पकड़ें तथा शिशु को गोद में लिटाकर न रखें। इस विमान में 8 आपातकालीन दरवाजे हैं। कृपया नोट करें कि बाहर जाने के दरवाजों की पहचान के लिए इस विमान में बाहर जाने के दरवाजों को हरे संकेत से दर्शाया गया है। इन हरे संकेतों के साथ एरो के निशान बाहर जाने के दरवाजों को दर्शाते हैं। इन हरे संकेतों द्वारा आप बाहर निकलने के नजदीकी दरवाजों का पता लगा सकते हैं। नजदीकी दरवाजा आपके पीछे की ओर भी हो सकता है। आपात स्थिति में सीट पर लगी बत्तियां जलेंगी और आपको नजदीकी दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता दिखाएंगी। जो यात्री दरवाजों के पास बैठे हैं उनसे निवेदन है कि वो बाहर जाने के दरवाजों को खोलने की विधि को ध्यान से समझ लें। यदि आपको इस बारे में कोई जानकारी चाहिए तो कृपया हमारे कैबिन क्रू से संपर्क करें। दरवाजे को खोलने के लिए हैंडल को दरवाजे पर दिखाए गए एरो की दिशा में घुमाएं। इस विमान में धूम्रपान एवं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीना सख्त मना है। टॉयलेट में स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं। स्मोक डिटेक्टरों से छेड़छाड़ करना अपराध है। कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर आपके ऊपर के यूनिट से ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाएंगे। ऑक्सीजन लेने के लिए मास्क को अपनी नाक और मुंह पर लगाएं। इलास्टिक बैंड को सिर के ऊपर कस लें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। अपना ऑक्सीजन मास्क ठीक तरह से लगाने के बाद कृपया अपने पास बैठे बच्चों तथा सहयात्रियों की मदद करें जिन्हें आपकी मदद की आवश्यकता हो सकती है। शिशुओं के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन मास्क उपलब्ध हैं। हर सीट के लिए एक रक्षा जैकेट उपलब्ध है। आपात स्थिति में यदि विमान को पानी पर उतरना पड़े तो क्रू द्वारा आपको रक्षा जैकेट निकालने के लिए कहा जाएगा। इसे सिर के ऊपर से पहने तथा रक्षा जैकेट की बेल्ट को कमर पर कस कर बांधें, जैसा कि आपको दिखाया गया है। रक्षा जैकेट को फुलाने के लिए सामने लगे लाल टॉगल को जोर से खींचें। आप इसे ऊपर लगी लाल ट्यूब में मुंह से हवा भरकर भी फुला सकते हैं। हर रक्षा जैकेट में एक बत्ती लगी हुई है जो बैटरी के पानी से छू जाने पर जल जाती है। रक्षा जैकेट को केवल क्रू के कहने पर या विमान से बाहर निकलने के तुरंत पहले फुलाएं। आवश्यकता होने पर क्रू द्वारा शिष्यों के लिए रक्षा जैकेट उपलब्ध कराई जाएगी। आपातकालीन लैंडिंग की असामान्य स्थिति में कृपया स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार ब्रेस पोजीशन में बैठें। कृपया सीट पॉकेट में रखे गए सुरक्षा संबंधी कार्ड को ध्यान पूर्वक पढ़ें। यदि आपको इस बारे में कोई जानकारी चाहिए तो कृपया कैबिन क्रू से संपर्क करें जिन्हें आपकी सहायता करने में खुशी होगी। कृपया नोट करें कि बाहर जाने के दरवाजों की पहचान के लिए इस विमान में बाहर जाने के दरवाजों को हरे संकेत से दर्शाया गया है। इन हरे संकेतों के साथ एरो के निशान बाहर जाने के दरवाजों को दर्शाते हैं। इन हरे संकेतों द्वारा आप बाहर निकलने के नजदीकी दरवाजों का पता लगा सकते हैं। नजदीकी दरवाजा आपके पीछे की ओर भी हो सकता है। धन्यवाद। हम आपकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। Taxi to and hold
short runway 23 via taxiway Alpha Bravo Papa Romeo 4 cross runway 23 Alpha IFLY 996. Ahmedabad Tower Air India 112 at runway 23 ready for departure to the south. Air India 112 hold short runway 23. Traffic is Airbus A321 on crosswind. Hold short runway 23 Air India 112. Air India 112 wind 179er at 9er. Traffic is Boeing 737 on final. South departure approved. Cleared for takeoff runway 23. Cleared for takeoff runway 23 Air India 1123.
Ahmedabad Tower, Vietjet 1805, 9 miles northeast inbound, ILS Zulu runway 23 approach. Vietjet 1805, Ahmedabad Tower. Altimeter 29.56, wind 179 at 9er. Cleared ILS Zulu runway 23 approach. Cleared ILS Zulu runway 23 approach, Vietjet 1805. Boeing 509er, go around. Going around Boeing 509er. Boeing 509er, contact Ahmedabad approach on 119.8. Good day. Air India 112 continue for south departure. 119.8 Boeing 509er. Goodbye. Vietjet 1805, wind 179er at 9er. Cleared to land runway 23. Ahmedabad Tower, Air India 112 continue for south departure. Cleared to land runway 23, Vietjet 1805. Ahmedabad Tower, Ripley 7168, 9 miles northeast inbound, ILS Zulu runway 23 approach. Ripley 7168, Ahmedabad Tower. Altimeter 29.56, wind 179 at 9er. Cleared ILS Zulu runway 23 approach. Air India 112 leaving my airspace frequency change approved. Ahmedabad Tower, Air India 112 frequency change. Ahmedabad approach, Air India 112 is type Airbus A320N 5 miles west of Ahmedabad, 1,900 feet. Request flight following. Air India 1123 Ahmedabad approach. Squawk 0505. Squawk 0505 Air India 112 Air India 1123 radar contact 5 miles west of Ahmedabad, 1,900 feet. Altimeter 29.56. Roger, Air India 1123. Boeing 509er, you are 300 feet below your assigned altitude. Climb and maintain 2,000 feet, altimeter 29.56. Climb and maintain 2,000 feet, Boeing 509er.
Ahmedabad approach Air India 112 tree. Request clearance to transition Charlie airspace. Air India 112 tree Ahmedabad approach. Clear through the Charlie airspace. Cleared through Charlie airspace Air India 112 tree. Air India 112 tree contact Mumbai Center on 132.7. Good day. 1 tree 2.7 Air India 112 tree. Goodbye. Mumbai Center Air India 112 tree 5,800 feet. Air India 112 tree Mumbai Center altimeter 29.5 tree radar contact continue. Italy 961 contact Ahmedabad approach on 128.375. Good day. Italy 961. Goodbye. Mumbai Center IFLY 996 is passing 1,000 feet, climbing 7,000 feet. Boeing 906 contact Ahmedabad approach on 128.375. Good day. IFLY 996 Mumbai Center altimeter 29.52 radar contact continue. 128.375 Boeing 906. Goodbye. IFLY 996 climb and maintain flight level 190. Climb and maintain flight level 190 IFLY 996. Mumbai Center Boeing Alpha Kilo Juliet 1906 is passing 9,700 feet, descending 2,000 feet.
Boeing Alpha Kilo Juliet 1906 Mumbai Center altimeter 29.53 radar contact. Continue to ADE 14. Niner 6 climb and maintain flight level 310. Climb and maintain flight level 310 IFLY Niner 6.
Y996 climb and maintain flight level 360. Climb and maintain flight level 360 IFL Y996.
IFLY 996, you are 700 feet below your assigned altitude. Climb and maintain flight level 360. Climb and maintain flight level 360, IFLY 996. Air India 112 you're leaving my airspace. Resume own navigation. Contact Varanasi Center on 120.75. Good day. 120.75 Air India 112 Goodbye. Varanasi Center Air India 112 flight level 275. Air India 112 Varanasi Center radar contact continue.
Skydive 1452 is at flight level 315, descending flight level 310. Skydive 1452 Varanasi Center, radar contact continue. Sim rate 1. Sim rate 1. May we have your attention, please? We will be landing shortly. Please keep your seat upright and seatbelt tightly fastened. Secure your tray table, footrest, in-arm video unit and handset. As a safety precaution, passengers seated in the front row of each cabin are required to store their PTVs when instructed by the crew. Electronic equipment must be switched off now. The cabin crew will be securing the cabin and removing baby bassinets. Please ensure that arrival immigration cards are completed. We thank you for your continued support and we hope you were able to spare your precious time in filling up the feedback form to help us to serve you better. We do look forward to having you on board again. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, कुछ ही देर में हम दिल्ली उतरेंगे. कृपया अपनी सीट सीधी कर लें और सीट बेल्ट कसकर बांध लें. ट्रे टेबल, फुटरेस्ट, इन-आर्म विंडो यूनिट, हैंडसेट को नियत स्थान पर रख दें. सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक कैबिन की पहली पंक्ति में बैठे यात्रियों से अनुरोध है कि वह क्रू द्वारा निर्देश दिए जाने पर पीटीवी को उसके नियत स्थान पर रख दें. अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें. कैबिन क्रू कैबिन को व्यवस्थित करेंगे और शिशुओं के बैसिनेट हटाएंगे. कृपया आगमन इमिग्रेशन कार्ड पूरी तरह से भरें. आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं. हमें आशा है फीडबैक फॉर्म भरने के लिए आप अपना बहुमूल्य समय निकाल पाए होंगे. इससे हमें आपको बेहतर सेवाएं देने में मदद मिलती है. हमें विश्वास है कि भविष्य में भी आप हमें फिर सेवा का अवसर देंगे. धन्यवाद. May we have your attention, I please? think you can do better than that. Please remain seated and do not open the overhead bins until the seatbelt sign is switched off. Passengers with pre-booked wheelchairs are requested to please be seated and you will be assisted after all the passengers deplane. You may use your mobile phones now. Passengers in the forward section are requested to deplane first. Before deplaning, please make sure to collect all your valuables and belongings like mobile phones, spectacles, books, carry bags, etc. On behalf of Air India, a member of Star Alliance, Captain and the crew take this opportunity to thank you for making Air India the airline of your choice. We look forward to the pleasure of flying you again. Thank you. Namaskar. कृपया ध्यान दीजिए, सभी का स्वागत है. सीट बेल्ट बांधने के संकेत रहने तक कृपया अपनी सीट पर ही बैठे रहें और सीट के ऊपर बने सामान कक्ष न खोलें. जिन यात्रियों ने पहले से ही व्हीलचेयर की बुकिंग कराई है, उनसे अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर ही बैठे रहें. सभी यात्रियों के विमान से उतरने के बाद आपको सहायता दी जाएगी. अब आप अपने मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं. आगे बैठे यात्रियों से निवेदन है कि वे पहले उतरें. विमान से उतरने से पहले कृपया अपना सारा सामान
मोबाइल फोन, चश्मा, किताब, कैरी बैग आदि Taxiing ले to जाना gate न भूलें। 225 via taxiway स्टार Zulu अलायंस के 50 सदस्य एयर Sierra इंडिया को 3 अपनी Yankee पसंदीदा Tango एयरलाइन 2 के Tango रूप Air में India चुनने पर 1123. कप्तान Delhi ठाकुर Tower Air आपके India आभारी हैं। 1123 हमें विश्वास is है 3 miles कि भविष्य southwest में of भी आप हमें फिर 1,600 सेवा का feet with अवसर Charlie to देंगे। land. धन्यवाद। Delhi Ground Air Canada 51 requesting pushback. Air Canada 51 pushback request accepted. Delhi Ground Ifly 5207 taxi to the gate. Ifly 5207 taxi to gate 238 via taxiway Uniform Papa Lima 2 Romeo Mike 1 Romeo Romeo 2 Romeo Tree Romeo 5 Sierra Charlie Whiskey 1 Whiskey Tree Charlie Whiskey 1 Whiskey 2 Charlie Whiskey 1 Tango Tango Tree Yankee Tango 2 Tango Sierra Tree. Taxiing to gate 238 using taxiway Uniform Papa Lima 2 Romeo Mike 1 Romeo Romeo 2 Romeo Tree Romeo 5 Sierra Charlie Whiskey 1 Whiskey Tree Charlie Whiskey 1 Whiskey 2 Charlie Whiskey 1 Tango Tango Tree Yankee Tango 2 Tango Sierra Tree Ifly 5207. Delhi Ground Air Canada 51 with Charlie ready to taxi IFR. Air Canada 51 taxi to and hold short of runway 11 using taxiway Charlie Whiskey 1 Whiskey 1 Charlie Whiskey 2 Tango Yankee 5 Yankee Sierra 4 Sierra 5 Zulu. Contact tower